Major General A.K. Chaturvedi, AVSM, VSM, is an Indian Army veteran retired in July 2012 after 38 years of distinguished service. A member of the Corps of Engineers, he graduated from College of Military Engineering in Pune and went on to earn an M.Tech from IIT Madras. He furthered his education with an MPhil from National Defence College in Delhi and holds a PhD in Energy Security Studies from Manipal University, Jaipur. Throughout his career, he has held a range of operational and staff positions. Since retiring, Major General Chaturvedi has been deeply engaged in academic research, concentrating on water security and regional geography. He is a prolific author with several published books and serves as a senior fellow at the Peninsula Foundation. With all due respect, I now invite Major General A.K. Chaturvedi, sir. I'm humbled with such a wonderful introduction. Thank you. Thank you to both of you for being so generous with your words. Honorable Vice Chairman, Seat M.R. Jaipuria School, Mrs. Anjali Jaipuria, Principal Mrs. Pramini Chopra, distinguished teachers, fellow students, parents, ladies and gentlemen. I am honored and thankful to the management of the school for inviting me to be the chief guest. I'm really humbled. In fact, I must share a small anecdote. You know, in good old days, we used to have those cassettes. So, once I attended a performance by Ustad Vilayat Ali Khan Sahab, and he played Darbari Kannada. And people forgot to clap after he finished. There was a lull for a few seconds, and then suddenly hall burst into clapping. So after listening such a wonderful exposition on Dharma, I think whatever I say would be actually very, very futile. Nothing much I can add to the depth of knowledge which Vice Chairman has given. Before emotions take over, let me compliment all those who have done wonderfully well and who would be receiving a little later the awards in today's felicitation ceremony. Well done, each one of you. The word waits for this excellence to continue. My compliments to the teachers for all the hard work they have put in to bring them to this level that such wonderful results are achieved. A great, great thanks, a big thank you to the management of this school for imbibing those values to go for excellence among the students. Actually, my problem is I'm astigmatism, so I really can't see. Today morning, when I came to know that I have to come and speak here, I thought that I must jot down some points. But we will start with this word excellence. You know, excellence is something, you all must have seen that ad, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे. I think that's the best example of excellence I have ever come across. Now, what all does it say? The first thing it says, a self-pride, which you all students should have, self-pride. Because if you have self-pride, because self-pride only gives self-confidence. And if you are confident, anything you can achieve. So, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे? The first thing is self-pride. Second thing which gives, not to accept anything less than the best. You know, it's a very famous saying that if you are prepared to accept less than the best, you often get it.
But that doesn't mean that you should stop striving for excellence. Excellence is a state of mind. And one of the major input into it is what 10th Guru of Sikhism, Guru Gobind Singh Ji had given, and which is one of the most decorated regiment of Indian Army, Sikh regiment, has there as motto, Nischay kar apni jeet karo. Now what does it mean? Nischay kar apni jeet karo. It means first you have to make up your mind that yes, I can. In fact, so much you all will be very happy to know, Obama in his acceptance speech as President of the United States of America used this phrase, yes, we can. And when you say yes, we can, that nischay kar apni jeet karo is entailed into it. So therefore, next thing which, bhala uski kameez meri kameez se safed, kaise? That if you make up your mind, anything is possible. So, all those who have done well, I have already complimented them. But those who haven't done well should not feel bad. Life is a great struggle. It's a long journey. It does not end today. I'll give this example. This Arjit Singh. He did not win any reality show. And today he earns highest among the male singers. So there are many who win those competitions, may not reach where they reach. Now, again, it has a lesson. The lesson is consistency. You can't live in between. Once you have made nischay kar apni jeet karo, you have to continue. Life is like a, what should I say? It's like a treadmill. If you want to remain standing on the treadmill, you have to continue walking. Now, therefore, the next very important lesson is, today you all are getting awards, doing well. But has anyone thought that today look at ISRO? Not even one scientist is BTech from IIT. Do you realize this? Has anyone realized this thing? They are all from Trivandrum Engineering College, REC, Calicut, and some such places. And one of them happens to be from Lucknow University also, and from this Navyug Kanya Vidyalaya, Ritu Karidhal. But they continued working. And today ISRO, in those frugal technologies, they are ahead of NASA also. NASA is seeking advice because what they achieved in Chandrayaan 3, even NASA is still not achieved. So therefore, life is a long journey. You have to keep on working, keep on working, keep on working. And reward of work is more work. So important thing is that excellence, you should aspire for excellence, but you have to continue working. Now there are certain, you can say, checks and balances. Long back I saw a movie, I think some old people may remember that movie. The name of that movie was Unche Log. Ashok Kumar, Rajkumar and Feroz Khan. Feroz Khan is youngest of the three. He is delinquent. Ashok Kumar is retired police inspector who is now blind. And Rajkumar is currently in police. Feroz Khan commits some small, not small, very major, mistake in his life. And Ashok Kumar tries to save him. And tries to save him to that extent that he tells the even lies for that. He is prepared to save him. Rajkumar says one dialogue in that.
एंड द डायलॉग वॉज, सच जब तक जूते पहनता है झूठ दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है, लेकिन झूठ वहीं का वहीं रहता है, सच आगे बढ़ जाता है. नाउ इट्स अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ. What does it say? The message it gives that righteousness is important in your act. Our ancient wisdom also says, what does it say? Nindantu niti nipuna yaduva estuvantu lakshmi samavishatu gacchatu va yathishtam marno vastu adde vayugantareva nyayat patha pravachalanti padam nadhira. That means whether, and it only gives you a kind of a courage to stand up for what you think is right. Many a times, you know, that conformist attitude in life tells you, अरे यार ऐसा ही होता है. I'll give you an example of my own daughter. We were talking to ma'am when we were having tea. She went for exam, a pre-board, and she was not doing well. She came back and she was fuming. He told me, Dad, you are useless. The first word used was, Dad, you are useless. ऐसे अरे भाई ये कहाँ से तो डमक गई इतनी ज़ोर से, कैसे, हमने क्या हो गया भाई? कहते you have given me all wrong values. I said, what values I have given you which are wrong? He said, today in examination hall, every child was copying. Every child was copying. So I said, did you copy? कहते, whenever I tried to look into someone's paper, I saw your face. So I couldn't copy. And देख लेना मेरे नंबर खराब हो जाएंगे. So मैं चुप रहा. मैंने कहा ठीक है, अच्छा ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट आने तो फिर बात करेंगे. जब रिजल्ट आया, so I asked her. And she forgot. गुस्सा उसा निकाल के वो अपना ठंडी हो गई. हमने कहा अच्छा इसको ठंडा हो जाने दो, अगला एग्जाम आ रहा है. तो जब एक रिज़ल्ट आया है, सेड यार एक बात बताओ, जिस पेपर में सब बच्चे कॉपिंग कर रहे थे उसमें से कितने बच्चों के नंबर तुमसे ज़्यादा आए? शी गेव सम फिगर 5, 6, 7 whatever number, I don't remember. I said of these 6, 7, how many would have got more marks than you even if you had copied and they would have copied? नंबर तो वही रहना था, वही 6-7 नंबर. वो क्लास में भी मेरे से आगे हैं, तो कॉपिंग और नो कॉपिंग. सो आई सेड दैट इज वेयर द लेसन लाइज. You know, we allow our fears to take our counsel. Student, please remember this point. This conformist attitude does not work. In life, you have to stand up for values you think is right. You have to stand up, always. And Nidar, Nirbhik, these are the two words. Imbibe them. And the best part is, those who stand up for these values, they often get it. They often get it what they want in life. तो वो जैसे एक है ना कि एक लाइफ जो है ना, इट्स अ जर्नी. तो उसमें एक वो बहुत पुराना शेर है, ढूंढता फिरता हूँ अपने आप को एक बाल, आप ही गोया मंजिल हूँ, आप ही मुसाफिर हूँ. सो यू हैव टू फाइंड योर जर्नी and keep on working for it. Now this is there is a lesson for parents here. My own sense is today, ये आप लोगों के लिए जो माँ बाप हैं उनके लिए है कि एक, क्योंकि आज का ज़माना इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा बिल्कुल क्लास में फर्स्ट आए, सेकेंड नहीं आना चाहिए. अब हो सकता है वो बच्चा जो है वो फर्स्ट के लायक उसका मन ही नहीं करता हो सकता है. अगर आप सचिन तेंदुलकर या महेंद्र सिंह धोनी, वो बेचारे सचिन तेंदुलकर तो 12वां नहीं पास कर सका, एंड ही इज़ कॉल्ड गॉड ऑफ क्रिकेट. महेंद्र सिंह धोनी ट्राइड लेवल बेस्ट, लेकिन अभी बेचारा ग्रेजुएट नहीं है. और उसने कहीं कि स्टेटमेंट बड़ा तगड़ा दिया था, वो बच्चों को मज़ा भी आएगा सुन के. उसने कहा, लोगों ने पूछा तुम इतना पीछे क्यों पड़े हो ग्रेजुएशन करने के लिए?
कहने यार कल कोई गलती हो जाए तो अगर जेल मिले तो सिगरेट ना मिले, नहीं चक्की पीसनी पड़ेगी, इसलिए मैं ग्रेजुएट बनना चाहता हूँ. So therefore, most important thing is that parents who live their dreams through their children, उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए. There should be a dialogue, continuous dialogue. Parents क्या दे सकते हैं? Parents बेस्ट चीज़ दे सकते हैं वैल्यूज़. फैमिली का बहुत रोल होता है. ये मैं इसको कमतर नहीं आंकता हूँ कि ये पेरेंट्स के लिए है कि वो कोई कम काम है. उनका ज़िंदगी में बच्चों के भविष्य बनाने में बहुत रोल है. आफ्टर ऑल दैट गर्ल जो मेरे को गाली दे रही थी कि तुमने मेरे को सब रॉन्ग वैल्यूज़ दिए, उसी वैल्यूज़ से आज टुडे शी इज़ डूइंग क्वाइट वेल इन लाइफ. बिकॉज आप अपने बच्चों को वैल्यूज़ दे सकते हो. बच्चों को वैल्यूज़ एक घर से मिलती हैं और एक स्कूल में मिलती हैं टीचर्स से. What I saw today, I am quite impressed. The teachers are giving a terrific job, and no wonder students are doing so well. So therefore, it is important that एक जो ये मैट्रिक्स है सक्सेस की, एक्सेलेंस की मैट्रिक्स है, उसके 3 एलिमेंट हैं. लाइक ऑल स्टेबिलिटी के लिए आपको 3 पॉइंट चाहिए, डायरेक्शन के लिए 3 पॉइंट चाहिए. टीचर, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स को अगर टीचर भी ऐसा मिल जाए जो कि उसको मेंटोरिंग कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखिए वो जो वेन डायग्राम में होता है ना कि कंसेंट्रिक सर्कल्स या सर्कल एक दूसरे को कभी जो ओवरलैप करते हैं, तो सक्सेस फ्रॉम दैट पोर्शन इज मैक्सिमम देयर दे ओवरलैप. तो पेरेंट्स ने आपको एक वैल्यूज़ दी, टीचर्स ने आपको मेंटोर किया, एंड विद दीज 2 थिंग्स you continue to progress and direction आपको मिल गया. because 2 points से तो कहीं भी आप जा सकते हो. So therefore the most important part is that parents have a role, teachers have a role. Then enabling environment. Now what is that enabling environment? अभी कपिल देव का एक बहुत मज़ेदार उसका कहीं मैंने अभी पढ़ा था रिसेंटली कि वो स्कूल सिर्फ इसलिए जाता था, और यही मोहम्मद अली का था, कि खेलने को मिलता है. जिस दिन पानी बरस गया बाकी बच्चे तो कहते थे रेनी डे हो गया, चलो मौज मस्ती है, आज घर में बैठ के पकौड़ा खाएंगे और मम्मी से कहेंगे चाय बना दो, तो चाय नहीं पिलाएंगी तो फिर कोई नहीं, कुछ जूस पिला देंगी, लेकिन बेड में लेटे रहेंगे और पानी बरसते में मौज करेंगे, गाने सुनेंगे, कैरम खेलेंगे, चेस खेलेंगे. वो कहता था अरे कहाँ पानी बरस गया, आज क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे. So therefore, enabling environment is where a child is allowed to prosper and progress as he deems fit. And now, in that enabling environment, 2 things are very important. And each of the children should remember. You know, एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. आप अगर वो साइंस में एक एस कर्व होता है टेक्नोलॉजी का, अगर आप उसको देखो, एम्ब्रायनिक स्टेज टू टेक ऑफ स्टेज, प्लेटो, एंड देन स्टार्ट्स कमिंग डाउन. ना अगर आप ज़िंदगी में वही करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो एक स्पोर्ट्स में एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा आजकल, पीकिंग एट द राइट टाइम. यू नो, सुना है बच्चों आप लोगों ने? हैव यू हर्ड दिस, पीकिंग एट द राइट टाइम इन स्पोर्ट्स? द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट हाउ डू यू लर्न टू पीक एट राइट टाइम? There are 2 things which are very important. One is sports, other is hobbies. Now what does sport do? Sports teaches you tremendous things. First and foremost, it gives you character to fight. You know, life में कुछ इजी नहीं होता. इजी अगर मुझे आपसे आज 2 गालियाँ खानी हैं तो मुझे आपको कुछ बुरा भला बोलना पड़ेगा, तब आप मुझे एक गाली या लात मारोगे. नहीं तो आप, मैं सड़क पर चल रहा हूँ, आप चल रहे हो, आप क्यों मुझे मारोगे? सो देयरफॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट एडवर्सिटीज आर वे ऑफ लाइफ. आज आप लोग 12th कर लिया आपने, तो ये ऐसा नहीं है कि आप बच्चों आपका लाइफ इज़ ओवर. लाइफ विल कंटिन्यू, बिगर चैलेंजेस विल कम. नए स्कूल में जाओगे, नए स्कूल से आपको नए तरह से लड़ना पड़ेगा. There are very few children who, there must be some children here, majority probably, from
lower classes to senior classes, they have remained in this environment. So therefore, they have not learned to cope with the change of environment. It's only the transferable job your parents have got. So therefore, you keep changing school, keep changing places. So you learn different languages, different. So therefore, the challenges will continue. How do you learn to cope with those challenges? Sports teach you. One example I often give. Now, पुराना example क्या देना अभी तो ये सूर्य कुमार यादव, that catch. There are only two things which changed, which India got this World Cup. Which were those two? Clausen's getting out by Bumrah and Surya Kumar Yadav taking catch of Miller. जिस हालत में 30 रन्स 30 बॉल्स छोड़ देना था इंडिया ने, क्या यार क्या फर्क पड़ता है यार, अब तो हार गए, कोई नहीं, रनर अब भी अच्छा है. They didn't give up. This only sports teach you. These things only sports teach you. So this character. Second thing is to work in a team. Individual performance takes you up to a point. How many of you can say this European League which just finished football? 3 players of Spain. Name of 3 players of Spain? No? 3 players, yes. Well done. At least someone knows. Otherwise, normally, it is the team which wins. So therefore, it is important that you learn to work in a team. Especially in India, where diversity of all kinds exist. Diversity of language, diversity of ethnicity, diversity of religion, everything which is there. So therefore, you learn to work in a team. You remember that, how many of you saw that movie, Chak De India? देखा था? उसमें लास्ट डायलॉग क्या था जिसके बाद उसने गोल मारा था? क्या बोला था डायलॉग में? किसी को याद है वो डायलॉग? That girl says, when she gives the back pass, that Komal Chautala gives a pass. दिखा दे उस लौंडे को. So that, don't go by the words. What is more important is that Australian coach knew all along there's these 2 girls, they don't pass to each other. But they won only when they played together. So therefore, second thing which sports teach you, to work in a team. And this is, for India, it is very important. तो ये जो आप लोगों को सुनाई पड़ता है कि ये फलाने का है, ये जात है, वो धर्म है, वो दिस इज ऑल बकवास. Our scriptures again give you a truth. And test of truth is that ekam sat viprah bahuda vadanti. There is only one truth and there are many ways to reach it. So आपका सोच आपके साथ, Charvak and Shankaracharya coexisted in India. 2 different philosophies. One is talking some other philosophy, other is talking some other philosophy. So therefore, it just doesn't matter which family you are from, which religion you follow, which faith you follow. We can be together, and that is the sports is one of the greatest example of that. You all must be thinking, India today, one of the organizations which is considered the most efficient and effective organization is the armed forces. The reason is they have got pure regiment and they are not so pure regiment. But there is a सर्व धर्म स्थल. वहाँ पे मौलवी साहब भी आके अपनी तकरीर करते हैं एंड पंडित जी भी जो हैं वो भाषण देते हैं. I belong to one such regiment. I am a practiced Hindu and a proud Hindu. But I know
Ardas better than Aarti because my troops were Sadas. So therefore, this kind of a national integration, and it is possible, and that is one of the core strength of Indian Army, that unity in diversity. This is what we learn. So enabling framework of success is that. Second is innovative skills. You know, आज हम लोगों ने किससे शुरू किया था? गणपति वंदना से. Why does कभी किसी ने सोचा कि गणपति की पूजा सबसे पहले कैसे की जाती है? साइंस स्टूडेंट्स कहेंगे विदाउट say kind of a hurting any religious sentiments. Can someone say that Ganpati's figure, is it possible to have this kind of a figure? It's a Humpty Dumpty. Head so heavy, CG so high, what will happen? It will collapse. But we call him Ganpati. He has the right to be worshipped first because of his intellectual equity, because of his sharp observation, because of his capability to discern danger in front, his capability to keep all kind of conspiracies under check, which is symbolic in the form of a rat. But Ganpati shows two more very interesting things, and which are very important in life. One is discipline, and second is innovative skills. How does he show that? When Goddess Parvati says, I am going for a bath, don't allow anyone to come. Now he shows tremendous, even at the cost of his life. He says to his father also, no, you can't go in. Because he was given. So in a framework, in any organization, अगर मैं बोलूं कि मेरी आँख जो है वो आगे देख रही, मेरा दिमाग कह रहा है कि मुझे सामने जाना है, लेकिन आँख कह रही कि मैं तो बाएं देखती हूँ तो मैं नीचे गिरूंगा नहीं यहाँ पे ना, हाथ भी मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. So like a body which is well coordinated, discipline is very important. Discipline helps you to remain in the team, because team का एक धर्म होता है, and जो धर्म है वो ये है कि भाई excellence, तभी excellence होगी, तभी उसको success मिलेगी जबकि वो उसके साथ चलेगा. Second thing, Ganpati shows innovative skill. जब उसके उनके भाई के बीच में कंपटीशन होना है तो वो कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप ही मेरी दुनिया है, क्योंकि वो चूहे पे बैठ करके पिकॉक का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे. दिस इनोवेटिव स्किल्स कहाँ से आती है? जो हॉबीज़ यू परसू. सो देयरफॉर जितनी पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टूडेंट्स, उतना ही एक हॉबी पिकअप करना बहुत ज़रूरी है. यू ऑल शुड हैव ए हॉबी. सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुकिंग हो, रीडिंग बुक हो, इंटरेक्टिंग विद पीपल हो, वॉचिंग मूवीज़ हो, कोई भी हो, एक हॉबी ज़रूर होना चाहिए. बिकॉज इट ऑल्सो दैट वो प्लेटो स्टेज नहीं आएगी कभी. ये सिनोसाइडल कर्व, वो आप रिदम जो मैडम ने बताया था, आपकी रिदम जारी रहेगी, क्योंकि उसमें एक स्पोर्ट्स में एक कॉन्सेप्ट होता है सुपर कॉम्पनसेशन. सुपर कॉम्पनसेशन जब तक नहीं होगा आप सर्कस आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो. नाउ विद ऑल दिस थिंग आपका एक और धर्म है, वो है योर ड्यूटी टुवर्ड्स दिस कंट्री. यू नो आर्मी के जो पहले कमांडेंट थे सर फिलिप चेटवुड, उन्होंने एक क्रेडो दिया है जो इंडियन आर्मी का आज भी क्रेडो है. उसके 3 पार्ट हैं वैसे तो. द फर्स्ट पार्ट इज योर कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. Then comes welfare of your troops, which you command, which Madam was talking of empathy and concern for your people around you. Your own ease and comfort last always and every time. So जो self abnegation है, that is very important. कि तुम्हारा वो जो 3 idiot का है ना कि काम करो सक्सेस तो झक मार के आएगी, तो वो ही याद रखना हमेशा. But most important is nation first. And nation is not only geographical boundary of India. Nation is values of India.
Nation is culture of India. So you all are going to be sentinel of that force which can help you to save this nation. And this dharma you can never absolve yourself from. Always work to see to it India remains united, strong. This is the way it should be, and victorious. 2 days down the line, day after tomorrow is Kargil Day. I'm not going to go into the technicalities as how war was fought and what was not. But do you realize that one of the most important thing in that war was most of the award winners were less than 30, except one, Major Hanifuddin. He was the only one जिसके नाम पे एक लद्दाख में एक सेक्टर है, सब सेक्टर हनीफ. Except him, who was 33 years of age, Manoj Pandey, Vikram Batra, Vijayan Thapar, Ajay Ahuja, they were all below 30. So therefore, this country can be saved only if youth is united and working for the country. किसी भी देश की जो सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये this demographic dividend is very strong in our case for whatever reason. There's a American strategist called Andrew Marshall, and he has said, and most of the reports are saying, that India is growing because of its youth power, educated youth power. Educated youth power with the envelope of values. Educated youth power which is supported by the family. Got it? Now you just compare it with China. China, there was a cultural revolution, 1966 to 1976. And what they destroyed was family system. They said, yeah, family is hocus pocus. And they are counter-revolutionaries because they are imbued with the old values. Jettison them. Second thing they did, whose price they are paying now, that they went for one-child norm. Why Galwan mein they got very solid knocking? Because that one child norm. माँ बाप भी बच्चे को फौज में नहीं भेजना चाहते, भेज में गलती से अगर वो 4 साल के कॉन्स्क्रिप्शन में आ भी गया, then he is a पप्पू. So pappus are not good. Sorry, I take back my word. I will not use this word because it may have some connotation. No political. I'm not political at all. I have nothing to do with politics. So therefore, this disclaimer I'll give. I have nothing to do with politics. But what I am saying is, when I say pappu, it means thought process wise. He is sissy. और दैट लड़का जो है, आपने देखा होगा, पिक्चर देखी होगी, वो बच्चे वो जवान जा रहे हैं, वो रो रहे हैं बिकॉज दे आर नो लॉन्गर यूज टू. आप फैमिली में लड़ाई होती है, सिबलिंग्स में एक होती है ना, राइवलरी होती है. एंड हमारे पीछे एक वो डॉक्टर साहब रहते हैं, उनके बच्चों को मैंने देखा, उनकी लड़की इज़ फार मोर वायलेंट ऑन स्पोर्ट्स फील्ड देन ब्रदर्स. She is tough as those. So you learn that kind of a thing. So they did not learn that kind of a thing. So one child norm, besides the entire generation becoming aged. So the workforce is reducing, the manufacturing which was their strength is going down. So therefore you all have got a huge responsibility to this nation, I would say, not country alone. So in the end, best wishes to all your future endeavors. वो क्या कहते हैं, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो नाम अपने आप सोचिए क्या करना है. पापा के कहने से नहीं कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने. नो, कोई डॉक्टर इंजीनियर आपको बनना है तो बनो, नहीं है तो नहीं बनो. किसी को मैथमेटिशियन बनना है, किसी को म्यूजिशियन बनना है, बनो. बट हैव दिस एटीट्यूड. I am parting with a story which I just shared with Principal Madam in the morning today. You must have heard this name, Garry Kasparov. Arguably one of the greatest chess player in modern times. Now when he was growing,
स्पेशली मैसेज पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है, बच्चों के लिए तो है लेकिन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा है। तो माँ बाप में एक चाहता था कि वो पेंटर बने, एक चाहता था कि वो डॉक्टर बने, क्योंकि उनके अपने एक्सपीरियंसेस थे कि भाई, और अपनी सेल्फ स्टीम थी। एंड बात यहाँ तक बढ़ गई, दैट्स अ डिफरेंट सोसाइटी। शायद इंडिया में ऐसा नहीं होता कि माँ बाप में ऐसी लड़ाई हो गई कि उन्होंने कहा कि जी लेट्स डिवोर्स। माँ ने बोला मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि बच्चा मेरा है। उनका क्या बात करती हो, मैं बाप हूँ, लड़का मेरे साथ रहना चाहिए। तो अभी कैसराव ने कहा यार पानी सर से ऊपर जा रहा तो ही सेड कि डू यू वांट टू आस्क मी व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ। आप लोग तो सोच रहे हो कि डॉक्टर और इंजीनियर, डॉक्टर और पेंटर बन जाओ, लेकिन मैं तो, मेरे से तो पूछो। तुमसे क्या पूछना, हम लोग बहुत अच्छा सोचते तुम्हारे, वी आर योर वेल विशर्स। नाउ वन ऑफ माई टीचर हैड यूज्ड द वर्ड क्रूअली काइंड। पेरेंट्स आर क्रूअली काइंड कि नहीं जी यही करना है क्योंकि हम चाहते हैं कि बगल वाली आंटी जी आएगी तो उससे कहेंगे नहीं जी हमारा बेटा तो IIT में पहुंच गया, आपका क्या हुआ, अरे इस बार अच्छा नहीं है लेकिन मैं उसको कोट कर रही हूँ, अगले साल वो ज़रूर उसको मैं कोटा भेज रही हूँ ना। कोटा जाए चाहे वो आजकल एक नए भी जगह आ गए हैं, कई नए सेंटर्स आ गए हैं कि वहाँ पे जाएगा, लेकिन वो तो कुछ और करना चाहता है। आप उसको भेज दोगे तो उसका क्या होगा, ये भी है रन ऑफ द मिल डॉक्टर एट बेस्ट, अगर बहुत मेहनत करेगा तो भी। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम क्या बनना चाहते हो, उनका मैं चेस प्लेयर। क्या दैट्स अ ब्लास्फेमी, ये तो बहुत ही बेकार की बात है, चेस में पैसा कहाँ है। उनका पैसा नहीं हो, मैं तो चेस प्लेयर ही बनूंगा। सो फाइनली माँ बाप मान गए। उन्होंने कहा कि नाउ यू बी द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। ही इज़ द ओनली चेस प्लेयर हु हैज़ डिफीटेड अ कंप्यूटर। सो देयरफॉर पेरेंट्स, ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप बच्चों से ज़रूर डायलॉग करो कि वो क्या चाहते हैं ज़िंदगी में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कलाम बन जाए या मोदी बन जाए या महात्मा गांधी बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वॉट यू डू, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हाउ यू डू। सो दिस ट्रिनिटी ऑफ पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, मे यू कीप प्रोड्यूसिंग द बेस्ट। MR Jaipuriya School is providing, St. MR Jaipuriya School is providing a very good environment. Learn all those values. Be the best in chosen field. This is what my best wishes to each one of you. Thank you for inviting me and being patient to listen to me. Jai Hind.